I know. How are you guys? I'm Good fine, morning, sir. sir. Good morning. My camera is off. I'll start it in a couple of minutes. Hello, Abhinav. Atif, welcome back. Yes, sir. Musharraf. Musharraf Imam, Yes, sir. how are you? I'm fine. Did you listen to the audio file I sent yesterday? Did you listen to the audio file yesterday? Yes, sir. Good, Simran. Musharraf did not listen to it. He is quiet. I want to learn Italian, but I don't want to listen to Italian. How will I learn? Somebody will put Italian in my mind when I'm sleeping, maybe. सो रहे होंगे तो कोई फूंक देगा ना इटालियन मेरे दिमाग में. कैसे ऐसा होगा दोस्त? मुशर्रफ, क्या करोगे तो सीख जाओगे मेरे दोस्त. तो सर नहीं, आपका आशीर्वाद रहेगा तो सीख जाएंगे. कुछ लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं ना, ऐसी सी बातें करते हैं ना. देयर वाज अ ऐसा गाय. बोल रहा था। ये आप कैसे सीखोगे मुशर्रफ? मेरे आशीर्वाद से सीखोगे ना, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं आपको. उसने सीखना तो है नहीं. सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? वीडियो सर। सॉरी, गिव मी अ मिनट. ऐसे भी आके क्या हो जाएगा मुशर्रफ? तूने तो ऑडियो फाइल सुना ही नहीं. वीडियो देख के क्या हो जाएगा भाई? What benefit will you get from the watching me? Nothing. You didn't listen to the audio. Okay, sorry guys. A student was here a few minutes ago with her son. Okay, she was my student many years ago. She came to visit me with her son and her husband. She is from a village near Pavapuri. I think Bhagwanpur village. Yeah, near Pavapuri. When she came to my class, I think it was 2015 or 14, maybe 15 or 14. Okay. She could not speak any English. She could not understand any English. Back then, all my classes were only physical classes, no online classes. She was in my physical class. She sat every day in the class without being able to understand me. She could not understand me at all. She couldn't understand he goes to school means what. She couldn't, okay? But slowly and slowly, she spent around 1 and a half with me. And I can tell you that she changed herself completely. She started not only to understand English, she started making sentences in English orally. She could talk in English. And that's why she visited me today with her husband. It was so surprising, even for me, that that girl could speak English. Everybody in her class was surprised with her improvement. When they listened to her speak English, they were like, wow, Guria finally learned. Wow, like this. Because, you know, there are people in villages who don't even understand English, forget about speaking, right? She was one of those people. She did it because she was dedicated, because she wanted to. She tried hard every day for 1 year. If you are doing the same Sir, thing we every can't see day you, sir. for
1 We year, can't see you will definitely screen. change. Yes, Faizan? Sir, we can't see you and other Yeah, you screen. can't see me because you guys, I can't see you. That's why. If you guys Oh, don't turn your camera on, I will not turn my camera on, everybody. If the student's camera is not on, the teacher's camera won't be on. Okay, you have to turn your camera on first, then I will turn my camera. How does that sound? Sounds like a good deal, guys? Good yes, sir. condition? Very good. Yeah. So, are you going to turn on your camera? Yes. And everybody else, if you want to see me, you have to be on camera as well. Let's see how many people want to see me. Active, good. So yesterday's homework, it was in the main book. There were some conversations. You listened to them? Yes, sir. They were interesting, right? The conversations were fun. 6 conversations. Let's listen to them. And the audio script is ready, guys? Yeah, good. Simran Bharti has written the audio script. Ranjit has written the audio script. And Nausheen too has written the audio script. Well done, Nausheen beta. Well done. And your handwriting. Very beautiful. And Nausheen beta, when you're writing a conversation, then usually there are 2 people, right? A and B talking to each other. So you should write A and B separately and their lines. That A says this, then B says this. A says this, then B says this. बता दिया मौसी को क्या बोली वो? Sir, at least share the screen, sir. वो ऐसे भी भेज देती तो हो जाता. चलो कोई नहीं. All right. Bring the camera. Sweetie has written her audio script. Ruxar has written her audio script. Well done, guys. I'm very happy. The class is doing great now. Mudassar Alam has also written his audio script. Everybody, listen. हमेशा सुन के लिखना बेटा आप लोग, okay? ये नहीं कि किसी और ने भेज दिया तो उसको उतार देते हैं, ठीक है? नहीं करना ऐसा, okay? क्योंकि लिखने का मकसद लिखना नहीं है, लिखने का मकसद सीखना है. तो लिख करके अगर सीखे नहीं तो फायदा क्या हुआ? खाना खाने का मकसद होता है पेट भरना, right? और स्वस्थ रहना, okay? So please understand why we are writing. We're writing to learn, okay? Now I'm gonna play the audio. Funny. For Alice. 2. Wow, where is it? In the centre of town. Is it nice? Oh, yes. Hello, It's guys. fantastic.
The living room is fabulous. You can see me? Yes, 3. What a horrible day. You can hear me, Yes, sir. but you can hear the audio file as well that I'm playing. Yes. Okay, but the students in my physical class cannot hear the audio file. Why is that? The students in my physical class. Yes, it is. French. 5. I love your shoes. They're great. They're nice, aren't they? They're Italian. The colour's amazing. Red. Wow. 6. We have a new teacher. Her name's Nancy. Is she nice? No, she's awful. I hate her. Why? I don't understand her. She talks and talks and talks all the time. All right, let's start again. Number 1. Nashin beta, conversation number 1. If you listen, A says, do you know Alice has a new boyfriend? Then B replies, really? Is he okay? Then A says, he's lovely. Is he okay? ठीक ठाक है? कैसा है लड़का? ठीक ढंग का है? Is he okay means? ढंग का लड़का है? कैसा बॉयफ्रेंड है उसका? बॉयफ्रेंड ढंग का है? कि इस बार भी पहले बार वाला जैसा? Okay? Is he okay? Then A says he's lovely. He is lovely. ये कौन बोलेगा he's lovely? First person who says, do you know Alice has a new boyfriend? उसको पता है. दूसरा तो पूछ रही है ना? Really? Is he okay? Oh, he's lovely. Take a look. Oh, yes, he's lovely. What's his name? James. Then who says good for Alice? First person says, the second person says good for Alice. Let's give them names, A and B. A says, do you know Alice has a new boyfriend? Alice. Alice is the name of the girl. Alice is the name of the girl. Okay. Do you know Alice has a new boyfriend? Alice, A-L-I-C-E, is the name of a girl. Okay. Alice is the name of a girl. Do you know Alice has a new boyfriend? Then B says, really? Is he okay? A says, yeah, he's lovely. Then B asks, what's his name? A replies, James. Then B says, good for Alice. Good for Alice that she has a new boyfriend now. Okay. Number 2, conversation number 2. Ben has a new flat. A says, Ben has a new flat. Then B says, wow, where is it? He has a new flat. Where is the new flat? It is in the center of town. It is in the center of town, or it is center of the town? It is center of the town, or it is in the center of town? It means it is. Yeah, no, I write it in the center of someone. Okay, let's listen then. Tape script 4.11. 1. Do you know Alice has a new boyfriend? Really? Is he okay? He's lovely. Oh, what's his name? James. Good for Alice. No problems? 2. Ben has a new flat. Wow. Ben has a new flat. Ben has a new flat. Wow, where is it? In the center of town. In the center of town. Where is it? One person asks, kahan hai? The other person replies, in the center of town. It is in the center of town. Then she asks, Is it nice? is it nice? Is it nice? Oh, yes. It's fantastic. The living room is
Simran, do you see what you have written? Fanatics. Oh, sorry, sir. It's autocorrect. Fanatics means? Phonetics, that Athena spoken. No, that's phonetics. This is fanatics. Fanatics means? That is phonetics. What you are talking about is phonetics. This is fanatics. Fanatics are those people who are ready to kill other people for their beliefs. They're ready to kill other people for their beliefs. It's a bad word. I'm not a fanatic. And religious fanatics, religious fanatics. It means those people who are ready to kill other people for their beliefs and faith. They are called fanatics. I'm not a religious fanatic. I hate fanatics. Everybody does, I think. Those people who don't value human life, they kill other people for their faith, for their beliefs, for their religion. They kill other people. Okay? So they are called fanatics. They hate other people. They hate other people because other people do not have their faith. So they hate other people. So they are called fanatics. He is such a fanatic. He is such a, अगर किसी के बारे में बोलना रहे उसका हो तो साला एक नंबर का, sorry, my don't pardon my foul language. तो ऐसे ही feeling देने के लिए fanatic. Okay. In some countries, religious fanatics are very powerful. In some countries, religious fanatics are very powerful. They decide everything because, in some countries, unfortunately. Fabulous. 3. What a horrible day. Yes, it is. Rain, rain, rain. It's terrible weather at the moment. Rain, rain, rain. It's terrible weather at the moment. Yes. मौसम एकदम खराब है. Terrible. Terrible means very bad. Terrible means very bad. Awful means very bad. Horrible means very bad. So the weather is terrible at the moment. It's terrible weather at the moment. Yes, it is. Well, tomorrow is another day. Tomorrow is? Tomorrow's another day. And another day nahi beta, Simran beta. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. It means the person is saying, I hope that tomorrow the weather will be better. Tomorrow is another day. It means I hope tomorrow will be different. It won't rain tomorrow. 4. This is an excellent meal. Thank you. I'm pleased you like it. This is an excellent meal. Thank you. I'm pleased you like it. I am pleased. Pleased means happy. Please. Feeling right, but pronunciation Pleased. Pleased. I'm pleased. I'm pleased you like it. And the wine is wonderful. Where is it from? And the wine is wonderful. Where is it from? I think it's French. I think it's French. Yes, it is. French. Yes, it is. French. So first he says, I think it's French. Then he looks at the label of the bottle and he becomes sure. Yeah, it is. Yes, French. Yes, it is French. When you buy something and people say, how much is it? कितने का है? 50 रुपए का होगा लगता है. I think it's 50 rupees. Yes, it is 50 rupees. Check करके बता दिया फिर, है ना? First, okay.
5. I love your shoes. They're great. They're nice, aren't they? They're Italian. The colour. I love your shoes. They're great. One person gives compliment to their friend. I love your shoes. They're great. I love your pants. They're great. I love your shirt. बोलो आगे. ऐसा नहीं चलता. ऐसा नहीं चलता. इसलिए मैंने बुलवाया ना. आपका दिमाग चेक कर रहा हूं बेटा. आप लोग का दिमाग चेक करो. सब लोग चुप मत रहो. प्रैक्टिस करो मेरे साथ. मेरे दोस्तों, मेरे ऑनलाइन क्लास में मैंने आज तक लड़कों को म्यूट करके नहीं रखा. पता है क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स नीड टू इंटरेक्ट विद मी. और तुम लोग ये जो मरे की तरह पड़े रहते हो चुपचाप से, इससे कोई स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख जाएगा बेटा. ये एकदम क्लियर मान लो. मेरे किसी क्लास में मैं कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखता ऑनलाइन. ठीक है? क्योंकि मुझे पता है उनका बोलना बहुत जरूरी है. और ये लोग, इनके पास कंट्रोल है, फिर भी चुपचाप से पड़े हैं. पिछले 10 मिनट में इन्होंने एक शब्द नहीं बोला है. बोला है क्या? नहीं ना. अगर वो क्लास में बैठे होते तो चुप से बैठे होते ऐसे जैसे बैठे हैं? नहीं ना. तो फिर क्यों ऐसा कर रहे वो? क्या ऑनलाइन क्लास मतलब आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा? नहीं. मेरे दोस्तों, आप लोग को भी वैसे ही पार्टिसिपेट करना चाहिए आंसर देने में जैसे आप क्लास में बैठे होते. तो ठीक, जरूरी नहीं कि आप अनम्यूट करके जवाब दें. आप म्यूट करते हुए भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन जहां पर मैं सुनना चाह रहा हूं जवाब, वहां पर तो आपको अनम्यूट करके बोलना चाहिए. ओके? तो अभी मैंने कहा आपसे आई लव योर शूज, देयर ग्रेट. फिर मैंने कहा आई लव योर पैंट्स, तो आपने कहा देयर ग्रेट. मैंने कहा वेरी गुड. आई लव योर शर्ट. तो यहां पर आप लोग को करना चाहिए अनम्यूट और बोलना चाहिए कि क्या बोलना है अगला लाइन. फिर आपने कहा दे आर ग्रेट. मैंने कहा फंस गए आप, गड़बड़ कर दिए. बताइए कैसे? दे एक प्रोनाउन है. दे क्या है? वो डिपेंड करता है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, इस पे. तो आपका दिमाग तुरंत एक्टिव होना चाहिए था. और व्हेन आई सेड आई लव योर शूज, दे आर ग्रेट. आई लव योर पैंट्स, दे आर ग्रेट. बट व्हेन आई सेड आई लव योर शर्ट, तो आप दे आर ग्रेट नहीं बोल सकते दोस्तों. इट्स ग्रेट वन. It's great. तो यही है इंग्लिश का पहला लेसन जो आपको पहले दिन मैंने पढ़ाया था. इट और दे का डिफरेंस. बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? इट सिंगुलर और दे इज प्लूरल. फिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो सोचते नहीं है. रुक रुक के सोचते नहीं एक एक वर्ड के बारे में. यही गलती है. हाँ, तो ऐसे नहीं बोलने का है. आपको एक एक वर्ड का वजह पता होना चाहिए. जो भी हम सिखा रहे हैं ना, उस इस तरीके में एक एक वर्ड का वजह पता होना चाहिए आपको. दे आर ग्रेट पहले ही बता चुका. दे मतलब प्लूरल. तो आपने कैसे बोला? शर्ट तो सिंगुलर है. आई लव योर शर्ट कैसे बोला आपने? दे आर ग्रेट. क्योंकि आप सोचे नहीं. ओके? सो थिंक एंड आंसर. मुझे पता था कि फंसने वाले, इसलिए तो करवाया था. कम से कम मुझे भी क्रेडिट दे दो कि सर आपको पता था ना कि हम लोग फंसेंगे. ऐसे तो सोच सकते तो. तभी ना आप इस लाइन पे 2 बार करवाए. I love your shoes, they're great. I love your pants, they're great. फिर आपने कहा I love your shirt. आपको पता था कि हम लोग दे को दे ही बोल देंगे, इट नहीं बोलेंगे. कितने लोगों ने इट किया था? कोई बताए मुझे कि मैंने इट किया था वहां पे? Anybody? और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़े एक्टिव हो जाओ. बार बार कह रहा हूं मैं, 2 से 3 बार एक बार बोलता हूँ, बात बोलता हूँ, तो फिर उसके बाद मुझे उस बात से चिढ़ होती है. पता है? मेरे ख्याल से ये नेचुरल है कि अजीब है? क्योंकि मैं सिखाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक्टिव होने के लिए. ठीक है? ये उसके बावजूद भी नहीं बोल रहे. क्यों? क्यों नहीं बोल रहे? क्या प्रॉब्लम है? मैंने कोई बहुत लंबा चौड़ा बोलने के लिए नहीं बोला था. रुखसार, यू आर नॉट ओके. स्वीटी, okay, you are on the bus. They are all telling me their problem in a way, indirectly. Rukhsar unmuted herself and she started coughing. I got it. She's sick. Sweetie unmuted herself and we could hear a bus siren, bus horn, right? Not siren, bus horn. Simran
I'm not doing anything, sir. Did you say it is great or they are great? What did you say in your mind when I talked about shirt? At that time, I was drinking water, so I didn't listen to the questions. So I don't understand. When people drink water, they don't hear things. No, sir. I go to the kitchen. I went to the kitchen. I have a strong objection to this, Simran. Sorry, If you were sir. sitting in the physical class, would you go into the kitchen to drink water without letting me know? No, sir. Then online class means this kind of freedom. It is not helping you. This freedom is hurting you, not helping you, Simran. Yes, sir. You can't leave the class because you are in a physical class. Again, you guys are forcing me to force rules on you. I'm not going to be okay with this. Again, I said as a joke that you guys turn on your camera, then I will turn my camera on. And now that my camera is on, you guys are all just sitting there. Some of you are perhaps not present there when I'm talking to you. How do you expect to learn from this? You guys need to bring your A game to the class, guys. You are here with your C game and you're expecting result of A type. Not possible. You got to bring your A game to the class. Come here with your full focus. Don't come here half-heartedly. Don't come here with other burdens on you. You cannot, unless it is really necessary, do not engage yourself in anything else. I was having this conversation with my daughter about this online class, and she said that, yes, Papa, some students, because she's also an online student sometimes, she says our psychology changes sometimes in an online class. You know, when we are present in the physical class, we are fully focused on what's going on in the class. And when we are in an online class, we don't really give it so much of, focus, so much attention. Somehow we take it more lightly. And I feel very strange that this is not something I'm used to. My classes were an exception. In most of my classes, students are actually pretty much involved, whether they are sitting online or sitting in the physical class, they are very much involved. It's a language class, a skill development class. Here, you need to be involved with what's going on in the class all the time, 90 minutes. You cannot take your eyes off. You cannot turn off your focus even for 1 minute. You can't, because in that 1 minute, whatever I teach will go, unnoticed. You will not learn it. It will go wasted. Okay, please take care and be more sincere, everybody, please. Okay. I know you all want to learn English, but there are certain things you need to do in order to improve your performance, okay? In order to learn faster, you need to do something slightly differently than you are doing, differently to what you're doing. Okay, so the sentence was, it's French. I love your shoes, they're great. The word they here is for shoes. So when I say, I love your cap, then I will not say they. Cap is a singular noun. So I will say it is great. Okay. And great means अगली बार बोल रहा हूं कि जब मैं पूछ के सवाल चुप हो जाऊं और अगर आप अनम्यूट करके जवाब नहीं दोगे तो मैं आपको अगले ही मोमेंट क्लास से बाहर कर दूंगा. सिंपल जवाब मेरा तरीका. आप में से कोई भी, अगर मैं यहाँ क्लास में सब लोग बैठे हैं और मैंने एक सवाल पूछा और चुप हो गया मैं पूछ के, इसका मतलब आई एम वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स, राइट? और ये लोग देंगे जवाब. अगर आप में से कोई जवाब नहीं देता है, मैं उसको सीधे रिमूव कर दूंगा क्लास से. सिंपल, और कुछ नहीं करने वाला. अगर आप जवाब नहीं दे रहे क्योंकि आपको नहीं पता, at least turn your camera on and stare into the camera that I don't know the answer. What do I say? हालांकि मैं ऐसा सवाल नहीं पूछ रहा हूं जहां आपको नहीं पता होगा. What did I ask you?
ग्रेट मीन्स, ठीक है। तो अगर आपको नहीं जवाब आ रहा है समझ में कि क्या बोलूं ग्रेट मीन्स, तो कैमरा ऑन करके उस पर देखो, ताकि मुझे पता है कि तुम हो वहां पर, भले ही तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, राइट। बट इफ यू डू नॉट टर्न योर कैमरा ऑन, you do not turn your mic on, and you do not reply, then you have no business staying in the class. There is no reason for you to stay in the class, because I asked a question and I'm waiting for a response from you. You're not responding. You are sitting there with your mic off, with your camera off. You have no business being in the class. As simple as that, everybody. So when I ask a question, you respond next moment. I can wait for 2-3 seconds, because I know sometimes the connection is not very good. Some people hear me a little late, 1 or 2 seconds, you see. So I'll understand that. But if you don't answer, do not turn off your mic, do not turn on your mic, do not turn on your camera, then why are you even sitting in the class? Why? What's the point? What's the point? Okay. So great means Very good. बहुत मजे का है। बढ़िया। what did you say, रुखसार बेटा? ग्रेट मीन्स बहुत अच्छा है, बहुत Yes, मजे का very है। good. Great means very good. अभी आपको अफसोस हो रहा होगा बैठ के रट्टा मारने का। ग्रेट मीन्स महान, बचपन में जो रट्टा मारे थे। यू कैन सिट हियर एंड रिग्रेट दैट, काहे के लिए टाइम वेस्ट किया था। ग्रेट, अगर ग्रेट मीन्स महान नहीं सोचा होता तो ये लाइन बोलने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। कुछ लोग को बहुत मुश्किल होती है, हम जूता को ग्रेट बोलेंगे। Sir, your camera is off, sir. You know, I love this thing so much that I'm unable to stop myself. Normally, sometimes I have something and I keep it, I eat it later, but this thing is so much favorite. I can't stop myself. What's that? Mosambi, oranges, I love them. Next. They are nice. They are nice only. No. This line I can't understand on the word. Okay. Okay. If I say to you, क्या गजब का जूता यार, मस्त लग रहा है तुम्हारा, अच्छा लग रहा है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन है लोगों का। क्या बोलते हैं लोग? अच्छा लग रहा है ना। सपोज आई से टू यू, यार गजब शर्ट तुम्हारा, मस्त लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है ना। आशीर्वाद से लिए थे कपड़वा, रेमंड का है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना आप। So the same thing comes as a response. When a person says to her friend, I love your shoes, they're great. Then she says, they're nice, aren't they? They're nice, aren't they? अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, they're nice, aren't they? They're nice, comma, aren't they, question mark. Yes. They're nice, aren't they? Everybody. They are nice. I love your shoes. I love your shoes. They are great. They're nice, aren't they? They are Italian. They are Italian. Italian. Simran, you can make the correction beta in the text. You know, Okay, you can sir. go to the edit option and you can make the correction, Simran. I love your shoes. They're great. And there should be a full stop beta. I love your shoes, full stop. Capital T, they are great. Please understand, everybody, how we write a sentence. A sentence ends with a full stop or a question mark or an exclamation mark. So I love your shoes can end with a full stop
It can also end with an exclamation mark. It can end with an exclamation mark, and you can say, I love your shoes. I love your shoes. Exclamation mark is fine. They're nice. I love your shoes. I love your shoes. And then They, yes, Simran, you did the right thing. They're great. Okay, you can put an exclamation mark here as well if you want to, because you are saying it with extra emotions. They're great. All right. I love your shoes. They're great. If you want, you can keep a full stop there. If you want, you can put an exclamation mark. Both are fine. Not a problem. Okay. I love your shoes. They're great. Then the other person says, they're nice, comma, aren't they? Simran beta, they're nice, comma, aren't they? They're nice. No. And this A will be small, okay? They're nice, aren't they? Suppose किसी ने कहा बड़ा क्यूट है आपका बेटा. हाँ, सुंदर है ना. आप भी ऐसे ही बोलते हैं, मतलब उसकी बात से अग्री करते हैं, है ना. Your son is so cute. आपने कहा your son is so cute. सामने वाले ने कहा हाँ सुंदर है ना. He is lovely, isn't he? He is lovely, isn't he? Okay. तो ऐसे ही किसी और भी मुद्दे पे आप बोलते हो, ऐसे ही करते हो बात. आपने कोई राय रख, किसी को कहा मस्त फिल्म है यार, और आपने भी देखी है, हाँ मजेदार है ना. You know, that film is amazing. किसी ने कहा, ओके, तो आपने कहा it's interesting, isn't it? मतलब आप अग्री कर रहे हो उससे. So I love your shoes, they're great. So उसने कहा they're nice, aren't they? They're Italian. She gives extra information. They are, the shoes are from, the shoes are from Italy. The shoes are from Italy. But the colors are amazing. And the color is amazing. Red, wow, the color is amazing. Colour's amazing. Colors amazing. And the colors amazing. Colors means color is. Colors amazing. And the colors amazing. अच्छा, वहां पर colors हैं क्या? हो सकते हैं, लेकिन उसने तो कहा red, यानी कि एक ही color है, red. So the color is amazing. Red, wow. The color is amazing. Dash, red. Wow. Stop. Okay, wow, exclamation. Punctuation marks भी सीखना है. क्यों, कैसे, वो पता चलता है आपको. Emotion, punctuation marks help you understand the emotions. The color is amazing. Dash, red, full stop. And the color is amazing, red. Wow. Okay. You can use an exclamation after red as well instead of full stop. Let's understand. Exclamation mark only means that you are speaking something with a lot of, extra emotions. Okay. So that's why you put an exclamation mark. A lot of extra emotions. Now next. Wow. 6. We have a new teacher. Her name's Nancy. Is she nice? We have a new teacher. Her name is Nancy. Simran beta, do you see the problem with the punctuation marks? Can you correct the punctuation marks, beta, on your own, or you need my help? We have a new teacher. Her name is Nancy. When you guys write audio script, okay, be careful about the punctuation marks, because an educated person knows about the punctuation marks. That's a big difference between people who are educated, well educated, and those who are not very well educated. Those who are not very well educated will never know what punctuation marks are needed.
Okay, but educated people, well-educated people, they know how to write. And punctuation marks are an important part of writing skill. Okay. We have a new teacher. Her name is Nancy. Well done, Simran Bita. Be a little careful next time. Yes, Is she nice? The father asked. No, she's awful. Awful. I hate her. Why? Why do you hate? Why? I don't understand her. I don't understand her. Again, Simran, there as well. I don't Yes. understand her. The sentence is over, dosto. I don't understand her. That sentence is over, complete. Right? Isn't that sentence complete? I don't understand her. What is a sentence? अगर आपको sentence नहीं पता चलेगा बेटा, तो आप कभी कुछ नहीं सीख पाओगे. I don't understand her, full stop. क्यों? खत्म हो गई बात. I don't understand her. अब नया बोलना होगा. She talks and talks and talks all the time. आपको बोलना मेरे पापा हर समय न्यूज देखते रहते हैं. आप बोल सकते हैं. My father watches the news all the time. Okay. Just check your audio script one more time. And Simran Bita, change fanatics into fantastic. Rain, 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 exclamation mark. Or exclamation mark or exclamation mark, or you can give a dash as well. If you give an exclamation after rain, 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 then its will start with a capital I. And if you give a dash, then its will be with a small I, no problems. Rain, 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 dash. It's terrible weather at the moment. Rain, 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 exclamation mark. It's terrible weather at the moment. So understand the concept of when a sentence is complete. When we speak a lot of sentences, one after another, one after another. But inside we know when we have completed a sentence. Then we start another, when we start another. And those people who don't understand an idea of a sentence, they think ये सारे words एक साथ है. नहीं, 5 sentences एक साथ बोल सकते हैं, full stop बोला नहीं जाता. But people know when the sentence is complete. So when you write the audio script next time, be careful about your, yes. Yes. In paragraph 6, all conditions, right? In the 6th conversation, This, here, yeah. We have a new teacher. All conditions, right? Think we are going through it with you. We have a new teacher. Her name is Nancy. Is she nice? No, she's awful. I hate her. Why? I don't understand her. She talks and talks and talks all the time. Which part do you have a problem with? I have no problem, but my sentence is incorrect in punctuation, so I understand that. So if you don't have any confusion at all, why would you ask? There must be some confusion, ना? कि कहीं पर कुछ थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ तो चल रहा होगा. No, You just wanted confirmation with me. Okay. Yeah, this seems good. Yeah. So everyone, now I'm putting you in the breakout room where you are going to practice all these 6 conversations with a partner. Are you ready? Sir, I have a question. In question 4, Yes. in conversation Yes, 4, Vijay. Yes, Vijay. there's this is an excellent meal. So then there after we can put an exclamation mark. We can. Again, I'm telling you, exclamation mark is not about grammar. It's about emotions. Exclamation means to It's an shout. expression. Exclamation is shouting. Exclaim is a verb. मतलब जोर से बोलना, emotions के साथ बोलना. What? He exclaimed. फिर से बोलता हूँ. What? He exclaimed. क्या? वो विस्मित होकर बोला. हिंदी में बोलते हैं विस्मित होके
विस्मित होना सुना है? नहीं सुना होगा। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है तुम लोगों की तुलना में, इसलिए मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है तुम्हारे तुलना में। और वहीं से होना विस्मित होना। एक्सक्लेमेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। हाँ, यानी विस्मय महसूस करना। विस्मय क्या होता है? विस्मय मतलब होता है अचानक से ढेर सारे इमोशन फील करना। व्हाट? किसी ने कुछ आकर बोला, अरे तुम्हारा ट्रक जो है ना उलट गया खाई में। व्हाट? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो एक्सक्लेम करना, तो आप जहां भी आप एक्सक्लेम कर रहे हैं ना, जहां पर आप जोर से इमोशन डाल के बोल रहे हैं, आप वहां एक्सक्लेमेशन डाल सकते हैं। आई वुड लाइक टू टेक यू गाइस टू माय मेन बुक where I would like to show you this text that you guys read in Unit 1 and take a look at this, dear students. देखो, I am in Notting Hill, London, England, exclamation mark. Why? Why exclamation mark? She is saying, I am an Italian student, but I am in Notting Hill, London, England. See, exclamation mark here. Why? Because she is saying this with a lot of extra emotions. कि है तुम इटालियन स्टूडेंट, लेकिन अभी हम नॉटिंग हिल लंदन इंग्लैंड में हैं। ऑलराइट, यहां देखना, they are very friendly but they speak very fast. See the exclamation here. एक्सक्लेमेशन जो है सिर्फ तुम्हारे इमोशंस बताता है कि तुम किस तरह से बोले। यहाँ फुल स्टॉप हो सकता है। they are very friendly but they speak very fast. मेरा बोलने का टोन ऐसा है, they are very friendly but they speak very fast. मैं ऐसे बोला तो फुल स्टॉप है मेरे सेंटेंस में। they are very friendly but they speak very fast. एक्सक्लेमेशन डालने मैंने, क्योंकि मैं एक्सक्लेम कर रहा हूं। एक्सक्लेम करना मतलब दोस्तों टू शाउट, ज्यादा इमोशन से बोलना। ओके, और भी दिखाता हूं, वेट फॉर अ सेकेंड, टेक अ लुक। इट्स ग्रेट, द नेशनल गैलरी इज फ्री, एक्सक्लेमेशन मार्क। डू यू सी? देखो, बोलो कि ये टेक्स्ट तुम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? क्या है ना, हम सब ऑब्जर्व नहीं करते, हर चीज को ऑब्जर्व नहीं करते। तो सीखना मतलब क्या होता है? ठीक है, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। जस्ट ट्राई एंड ऑब्जर्व मोर। द कॉफी इज ग्रेट, द फूड इज ओके टू, and the coffee is great. There are a lot of Italian coffee bars in London. Check out my photos. ये सब वो नॉर्मल नहीं बोल रही हैं, exclaim कर रही हैं। It means she is saying these things with a lot of extra emotions. So when you put in a lot of extra emotions in your sentences, you can end those sentences with a question mark. Is that okay? Sorry, exclamation mark. What did I say? Question mark. Please say some more information about dash. Dash is used as an exclamation mark, as in punctuation mark, when you have not finished what you're talking about. You're saying something related to it. Rain, 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 dash. It's terrible weather at the moment. Again, I love the color. The color is amazing. Dash. Red, exclamation. Because the color is amazing. और उसी बारे में है, कलर के बारे में है, dash, red. So dash is used to talk about something related to what you're talking about. It's not complete yet. You will notice when you see these things, okay? जहां जहां मिले dash वगैरह, दिमाग लगाओ, क्यों है, कैसे है, observe. स्कूल में मैं पढ़ाता ना, तो मैं क्या नहीं सिखाता। और ये सब चीजें स्कूल की चीजें मेरे दोस्तों, प्लीज मेरी बात समझो। तुम सब विक्टिम्स हो पुअर स्कूलिंग के। You are all victims of, all of you, everybody here, all of you are victims of poor schooling. And I'm not saying that सिर्फ मेरे चले जाने से स्कूल में या मेरे जैसे टीचर होने से स्कूलिंग बदल जाएगी, वो एक स्टेप होगा, बट और भी फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, if a class has 60 students, 50 students, and there is one teacher,
I'm sorry, it's not going to be okay. A teacher alone cannot take care of 50, 60 young boys and girls, kids. It's difficult. They all need the teacher's attention individually because they have their individual problems. Each student has their individual problems. But because there are so many students, the teacher is not in a position to give them that individual attention. Imagine if this class was crowded with 100 students. Your problem may not get the focus, the attention that you want, okay? Because there would be 100 students. If I give attention on your problem, then somebody else may feel ignored because there will be so many. So when there are 30, 40 students, you guys are adults, you know, I can do that because I'm helping you understand language. It's a different thing. अगर मैं यहाँ खड़ा होकर के कोई एक मैथ्स का क्वेश्चन बनाऊं तो हो सकता है सारे के सारे समझ जाएं. अलग अलग चीजें. ये लैंग्वेज क्लास है बेटा, इसमें ना 100 लड़कों को नहीं पढ़ाया जा सकता एक साथ. मैं जो चीजें मैं ग्रामर में पढ़ाना चाहता हूं वहां चीजें चलेंगी. 100 क्या 200 बैठा दोगे मैं पढ़ा दूंगा ग्रामर, ठीक है. बट व्हेन आई एम टीचिंग स्पोकन इंग्लिश, the class cannot be bigger than 30, 40 students. If there are more, then there will be problems. Some people will feel ignored. I know it. And that's why spoken English class is more expensive. Because here, the teacher cannot have more students. Now, I give individual classes, one student at a time, okay? Just one student. I ask them to pay me $10 for 1 hour. How much is $10? 700, 800 rupees. 800 rupees for 1 hour only, not for 1 month. 1 hour I ask them to pay because I'm spending 1 hour with them alone. Okay, so I ask them to pay $10. If there are 2, 3, then they pay me $15 or $20 together. So I ask them to pay 1,600 rupees for 1 hour. So the thing I'm trying to tell you is, if there are more students, like 15 students, 20 students, then I can ask them to share the cost, right? If there are 200 students, of course, the class will be a little cheaper for them individually, okay? So understand all these things as well. These things are factors. By the way, observation, work on your observation, okay? मैंने कहा ये सब चीजें स्कूल में सीखनी थी. हम लोग स्कूल से निकल आते हैं, अब 20 साल के बाद हम लोग पहली दफा ये सब पढ़ रहे होते हैं. क्या मजाक है यार. तो स्कूल किस लिए गए थे हम? जोड़ग्राफ सीखने के लिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेने के लिए. और ऐसा नहीं कि आपकी गलती है कि आपको नहीं आता, किसी को नहीं आता. अपने दोस्त परिवार में किसी से पूछो डैश कॉमा यूज कैसे करते हैं. कुछ लोग तो ये तरह कुछ बातें बोल देंगे जो टीचर ने बोला होगा. There are quite a few factors. One, less efficient teachers. Teachers do not know a lot of things that they should know before they start teaching. There was this student, she lives in Bard, the girl who came to visit me, I told you about, with her husband and her child. So she lives in, with her husband, she lives in Bard. She says, sir, teaching standards are very poor in Bard. Compare the teachers in Bard and the teachers in Bihar Sharif, okay? You'll realize that the teachers in Bard don't know as much as some students in Bihar Sharif. Bihar Sharif has much better teaching standards in comparison to Bard. But when you compare Bihar Sharif with other places, better places, then Bihar Sharif has much poorer teaching standards. So you guys are all victims of poor schooling. Your school was not good enough. That's why you don't know all these things. That's it. Otherwise, 10 years is a lot of time to learn. Okay, you don't spend your entire day with me. You spend only 90 minutes with me here, right? At school, you would spend 45 minutes. Yeah. Each period is 40, 45 minutes. So every day I come to English class was almost every day, 6 days a week. Monday to Saturday, you had English classes. Okay, 5 days at least, Monday to Friday. So every day you had an English class at school, 45 minutes every day, right? For 10 years. That's a lot of time to teach this, that.
But the problem is because you don't approach it the right way. Look at the books they have, the books the students have for class 3, for class 4. The problem is there is a clear lack of connection between the students level and the level of the book. आपको जोड़ घटाव नहीं आती सपोज, ठीक है, और मैं आपको खूब लाभ हानि सिखाया जा रहा हूं, आपको प्रतिशत का कॉन्सेप्ट नहीं पता, एंड आई एम टीचिंग यू चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट. आपको कितना समय लगेगा सीखने में? आप कब कॉन्फिडेंट हो पाओगे? ऑलमोस्ट नेवर, because you don't have the concept for percentage, right? My point is the same. Students do not have any concept for English, and they look at their books so difficult, and they have to read those books, do the question answers. Disconnect, clear disconnect between the books and their standards. Maths, your mind and the book, they are at the same level. When you are in class 3, most students, those who are studying that book, their mind is also at the same level, what the book wants to teach. When they go into class 6, okay, their mind is at the same level as the book. They understand what's written in the book, and they're ready for class 7th, class 8th, and this is how your maths grows, but not your English, because there is a disconnect between your level and your books at school. These are my observations. These are my observations of why people in places like Bihar Sharif have problems with English, why all of us have problems with English. We are clever people, intelligent people. Why don't we understand English so very well? These are the reasons. Okay. Moving on. Are we ready to practice? Shall I open the room? Yes, Or, sir. did I answer your question, Simran Beta? Yes, sir. Anybody else has any other questions? No, I just No. you. I'm Okay. agree. Let's. Yes, Faizan, do you have a question? No, sir. I'm just saying. I agree with your Observations. observation. Okay. Hello, everybody. I'm opening the rooms. Cooperate with your partners. Cooperate with your partners. Don't judge your partners. If your partners have some problems, please help them. Practice the conversation. And don't just read. मैंने सिर्फ लिखने के लिए नहीं कहा था, समझने के लिए कहा था. तो अभी भी प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूँ, तो पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, समझने के लिए कह रहा हूँ. हमारा हमेशा पर्पस एक होना चाहिए. लिख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस पर्पस होना चाहिए समझने. Please try to understand things. Go ahead. Join the breakout rooms, everyone. Sharaf, Atif, Zeba Beta, please join the breakout room. Your partners are waiting for you. Sir, I'm not well, sir. I was. You should have told me. You should have told me earlier, sweetie. You should have told me earlier. Okay. Now, at least you can go and listen to the conversation, Beta. Like you're listening to me, Just listen to your friends. Okay, sir. Yeah. Atif, what happened, Atif? You're stuck here.
Oh. Okay. All right, everybody. Now let's get back to our book. Students, let's learn an idea. Very interesting concept in English. So there is, look at the three buildings page. From desktop or file, You can see the three buildings, right? We can describe them all with the word big. एक word big से तीनों को describe कर सकते हैं. Not very big. For example, we can say this building is big, this building is very big, this building is really big, this building is not very big. ये भी एक तरीका है, okay? तो big ही adjective था ना? Big में कुछ extra जोड़ के हम लोगों ने इसको strong कर दिया. Very big, really big, okay? Not very big. Not very big. Yes, like this. Okay. So, yep, simple and easy. Which is strong? Very or really? Zyada kaun is stronger? Very ki really? Really is stronger, right? Okay. Now, you're going to listen to 5 conversations. They are talking about somebody or something. In these conversations, they are talking about somebody or something. What or who are they talking about? So you have to find out when you listen. Okay, when you listen, you will find out what they are talking about and who they are talking about. Let's listen. Just listen and try to complete the first column. In the first conversation, they are talking about Angela's car, as it is written here. It is written here. What are they talking about in the second conversation? You will find out. I'm playing 4.12. Script 4.12. 1. Look at Angela's car. It's a Mercedes. Wow, they're really expensive. Is it fast? Very fast. 2. Does Tom have a lot of money? Well, he has a really beautiful house with a very big garden and a swimming pool. He's very rich, isn't he? 3. Do you like my new jeans? Yeah, they're really nice. What make are they? They're Prada. How much were they? They weren't expensive. Well, not very expensive. 4. Look, that's Peter's new girlfriend. She's pretty. How old is she? 28. Wow, that's old. 28? That isn't very old. 5. Maria's very clever, isn't she? Oh, yes. She's really intelligent. She knows everything. Do you like her? No, not really. She isn't very nice to talk to. No, I don't like her either. Okay, don't worry. I'll play it again. Don't sweat. Don't sweat. Don't sweat. It's okay. I understand. One by one, okay? I'm going to play the first conversation first. Listen to it. Script 4.12. 1. Look at Angela's car. It's a Mercedes. What? So they are talking about Angela's car. One says, look at Angela's car. It's a Mercedes. Mercedes. हम लोग जिसको मर्सिडीज मर्सिडीज बोलने की आदत डाले हुए ना उसको इंग्लिश में मर्सिडीज बोलते हैं. Okay? Yeah. Wow, they're really expensive. Is it fast? Very fast.
So this conversation was about Car. Angela's car. It's a Mercedes. Mercedes. Okay. 2. Does Tom have a lot of money? Repeat. Does Tom Tom have a lot of money. have a lot of money? Does Tom have a lot of Money. Yes. Well done, Simra. Well done, Nashin beta. Really beautiful house Oh, he has a really beautiful house. with a very big garden and a very big garden. swimming pool. A swimming pool. He's very rich, isn't he? He is very rich, isn't he? Isn't he? What is this conversation about? Who is this conversation about? This conversation is about Tom. No, this Tom. conversation is about. आपको क्या लगता है किस बारे में बात हो रही थी? वो दोनों किसके बारे में बात कर रहे थे? Tom के बारे में बात कर रहे थे. Tom is the name of that man, right? Tom. Yeah. They were talking about Tom and his. Does he have money? Does he have a beautiful car? So basically, the conversation was about Tom and yes, Nausheen. But we can say that this conversation is about Tom and his money. His money, his wealth, right? This conversation is basically about Tom and his wealth. They did not talk about his wife. They did not talk about his children. They did not talk about his job. They talked about his wealth. He has a God. He has a God and this, that, yeah. So he is very rich. Two girls, they're talking about a man and his money. Do you understand this? Yes. Two girls are talking about a man and his money. Like two boys sometimes talk to each other about a girl and her looks. You know, she's very hot, she's very beautiful. Similarly, two girls talk about a man and his money. Oh, he has got 5 houses, you know, like this. They both are interested in his wealth. Or maybe they're interested in Tom now because Tom is rich. No, sir. In the teenager, every girl doesn't have any idea and any choice about for the money. importance of money. Money, yeah. But after sometimes, see, They become aware. Yeah. They realize it. And Absolutely, every I girl agree wants to with my wealth. Every girls want to. Teenaged girls. Teenaged girls. क्या बोलते हैं? Teenage girl. AGED. Teenage, sir. TEEN teen. AGED. Teenaged girls. Oh. Teenaged girls. It isn't, sir, teenager. मतलब कम उम्र. Oh. मतलब 16-17-18 वाली लड़की. I always said teenager. Teenager is also correct. Teenager is a noun. Teenager. उसके बाद girl नहीं बोल सकते. Oh. Yes, teenaged. Okay. Teenaged. Yes. Teenaged girl. Yeah, teenaged girls. Okay, sir. Let me check if teenage works as an adjective as well. But sir, how we can know, sir, gender, sir, when only we said teenage? Teenagers. Teenage, yes, sir. Teenager. Teenager is a boy or a girl. It's a common gender word. But sir, if I want to say teenager girl, then sir? Teenaged girls. Teenaged girl. Okay, sir. Okay. Okay. Yes. देखो दोनों ही बोलते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ. Sir, please share the screen. Yeah, just give me a second. Take a look at this here. In the US, people use teenage adjective. Also teenaged girls. Okay. So you can say teenage girls, teenaged girls. Both are correct. Teenage girls and teenaged girls. Both are correct. And teenage sons,
teenaged sons. Both are correct. So there are two adjectives, teenage and teenaged, or teenagers is a noun. Singular teenager, plural teenagers. Okay. Are you a teenager? Are you a teenager? Are you a teenager? Means, are you 14, 15, 16? My daughter is a teenager. My daughter is a teenage girl. It means she is in her teenage. Teen कहाँ से आता है पता है? वो number है ना? 13, 14, 15, सब में teen सुन रहे हो? तो ये जब तक 18, रहेगा 19. yeah, teenage, okay? Teenager, okay. Normally people when they are 19 उसको फिर teenager नहीं बोलते. Technically they are, but they are not called teenagers because after 18 they become adults. So they are not called teenagers anymore. Okay. But technically you are a teenager because there is teen with your number. Okay. 13, 14, 15. So you're right. I agree with you, Faizan, that, you know, when girls are in their young age, they don't care about money that much. Majority of girls don't want to have rich boyfriends. Young girls, they don't care about rich boyfriends. They care about a nice guy, someone who can make them feel good, someone who makes them feel special. Okay, that's it. When they grow a little mature in their 20s, they realize the importance of money, and then they want a rich husband. But a lot of girls today don't care. Again, a lot of girls today don't care whether their husbands are rich or not. They earn their own money. They earn their own money. They don't depend on their husbands for money. They say, I don't care about how much you earn. I want a man, not a businessman. You know what I mean? They want a man in life, not a businessman in life. They want a man in life as a girl, not as a human being. Try and understand the difference. A lot of women depend on their husbands financially. If their husband does not earn money, they will not have food to eat. They will not have clothes to wear. They fully depend on their husbands financially, like my mother was. My mother did not earn any money. She was always at home. It was those days, 30 years ago, that it was okay. Today, lots of men and women don't want that kind of chemistry where one man earns the money and the other one depends on him. This is dangerous for the woman, because when the man changes his mind, the woman is helpless. Thank God we have a system where if a man, suppose you are married, you are a man, and you want to leave your wife, you want to give up, say no, the court says give some money to her. Yeah. Otherwise, in the past, a woman was completely at the mercy of the man, at the mercy of her husband. You know, if he decides to support her, okay. If he decides to ignore her, nobody could say anything. But today, first of all, women have their own jobs. A lot of them, 20–30% people have jobs. You know, women, they are working, they're teachers, they're in banks, they're everywhere. Insurance agents, they're everywhere. They earn their own money. So they don't depend on their husbands financially, which is a good thing. Because when you are financially independent, then you want a partner who understands you. But if you are financially dependent, अपना खुद का कमाई नहीं है, तो आपको एक देख रेख करने वाला चाहिए और आप उसकी नौकरानी. Sorry, don't mind, but that is how it is normally आज के डेट में. क्योंकि जब भी चाहेगा वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा उसको क्या करना है. तुम्हारे घर वालों को पैसे की जरूरत है, वो शायद मदद ना कर पाए, उसकी मर्जी, इंटरेस्ट नहीं है, right? क्योंकि he earns the money. If you earn money, you can help your family too. This is the reason why they did not respect girl child, because बेटी बाप की मदद नहीं कर पाती थी ना पहले. उसका हस्बैंड चाहेगा तो कर पाता था, तो वो कैसे बेटी को उतना वैल्यू करते? बेटा कर सकता था, right? So they obviously did not appreciate a girl child as much. But today your girl can be a pilot and she earns 50,000, 1 lakh rupees per month, and she can help you. You are a father, but your daughter can help you today. So that's why we see some sort of equality now, not 100%, but better equality between boys and girls today in society, because everybody has started to realize Kiran Bedi was a girl, right? But she managed to do things that men do.
Okay, so not only her father, lots of fathers saw that and they said, oh, girls can do it. So their mind opened up. Every example opens lots of people's minds. Their mind changes, It's important, guys, very important. So I want you to listen to the audio file 4.12 and write the audio script just like you did for 4.11. Okay, everybody? This is your homework for tomorrow. Your mother was lucky, guys. Remember, your mother was lucky. Your father was lucky because they grew up 30 years ago when life was simpler and easier. Today, life is more challenging for married people. For married people, life is more difficult today. Acha, think about it this way. You have to eat dal bhat sabji every day. Okay? And around your house, there are no restaurants, no cafes, no thelas, no chaat, no samosas. Then you eat that dal bhat sabji every day very, very well. But imagine you have to eat dal bhat sabji in your house and there are different food stalls around your house and you don't have the permission to eat these things. Then you get angry with your dal bhat sabji or not when you see so many different food items around you. अब आप मेरी एनालॉजी समझ पा रहे हैं? मैंने ऐसा क्यों बोला समझ में आ रहा है? क्या मैं खाने की बात कर रहा था यहाँ पे? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिड लाइफ. पहले क्या था? देयर वाज पीपल हु वर मैरिड, उनकी वाइफ हो गई, उनके हस्बैंड हो गए, बात खत्म. आसपास में कोई ऐसे चाट भंडार नहीं थे, समोसे की दुकान नहीं थी. आज फेसबुक पे जाओ, तुरंत 10 लड़कियों की तस्वीर जो आपसे बात करने के लिए बैठी हैं, हाय हेलो करने के लिए बैठी हैं, राइट? 10 हैंडसम लड़के जो आपसे हाय हेलो करने के लिए बैठे हैं. तो अचानक से ये जो घर पे दाल भात सब्जी है, ये थोड़ा सा बुरा लगने लग जाता है ना? आप समझ रहे हो? जब आपके आसपास कोई दुकान ही नहीं है तो आप आराम से दाल भात सब्जी खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं रोज. लेकिन भाई कल बगल में वहां चाट बन रहा है, वहां बिरयानी बन रही है, वहां पे समोसा बन रहा है और कहीं आपको कुछ अलाउड ही नहीं, आपको यही दाल भात सब्जी खाना है. चलो दाल भात सब्जी की जगह मैं यहाँ पर बिरयानी ही कर दूं ना, तुमने बहुत बढ़िया चुना, कोई बात नहीं. लेकिन तुम रोज बिरयानी खा रहे हो, बगल में समोसे की दुकान है, तुम समोसा नहीं खाने का तुमको फ्रीडम है, तो टेंशन हो रहा है क्योंकि बगल में है समोसा. एकदम बहुत दूर होता तो टेंशन नहीं था. तो आज मैरिड लोगों के लिए इतनी टेम्पटेशंस हैं, उनके फेसबुक पे, उनके व्हाट्सएप पे, जहां ऑफिस जाते हैं काम करने, वहां 4 औरतें खूबसूरत खूबसूरत. तो ये टेम्पटेशन कितना ज्यादा हो गया है मैरिड लोगों के लिए. तो बीइंग मैरिड टुडे इज मोर, आई विल से, चैलेंजिंग देन इट वाज इन द पास्ट. दैट्स व्हाई आई सेड योर पेरेंट्स वर लकी, योर मम्मी एंड पापा वर लकी. आज अगर आप दूसरे के भरोसे हो तो अगला कब किसी और चाट की दुकान पे चला गया, आप रह जाएंगे, आपको खाने के लिए कोई है ही नहीं. तो आप अपना इंतजाम खुद से कर लो भाई, अपना अपना पैर पे रहो, ताकि कल अगर कोई जाए तो कोई बात नहीं, गया तो गया. फिर इमोशनल टेंशन तो होता ही है, लेकिन कम से कम आपको, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे. ओके, क्योंकि रिश्ते तो किसी के भी टूट सकते हैं, राइट? बट यू हैव टू बी केयरफुल कि आप अपने आप का वजन ले जाने लायक रहो. मतलब यू कैन बी, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू सपोर्ट योरसेल्फ. तो आप लोग अपनी बहनों को कैसा बनाना चाहोगे कि कल अगर उसके हस्बैंड का मूड बदल जाए तो वो किसी अपने आप को सपोर्ट करने लायक ना रहे, या वो अपने आप को सपोर्ट करने लायक रहे? ये आप पे डिपेंड करता है. आंसर आपको देना है, चॉइस आपकी है, क्योंकि रिश्ते तो किसी के भी टूट सकते हैं. इसमें जरूरी नहीं कि कोई बुरा कोई भला हो, कभी कभी कोई बुरा और भला भी होता है, कई बार सिर्फ म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग की कमी भी होती है. एंड समटाइम्स तो किसी भी हालात में, आई एम ए फादर ऑफ अ डॉटर, तो मैं क्या चाहूंगा, कल मैं, मेरी बेटी की शादी एक इंसान से हो जाए, बहुत अच्छा है कि वो अच्छा निकले, अच्छा इंसान निकले. लेकिन अगर ऐसा निकला जिसकी वजह से मेरी बेटी खुश नहीं है और वो उसको छोड़ दे, तो फिर मेरी बेटी अपने आप की भी देखभाल करने लायक ना रहे. तो ये कैसा पिता मैं कैसा पिता कि मैंने इस लायक भी नहीं बनाया अपनी बेटी को. She can look after Sir, herself. you are right, sir. But sometimes, sir, parents are regret because they give her permission to do what she want
नहीं, व्हाट शी वांट्स मैंने नहीं कहा, व्हाट शी वांट्स मैंने नहीं कहा, आप गलत फ्रेज मत करिए। मैंने नहीं कहा अलाउ योर डॉटर टू डू व्हाट शी वांट्स, मैंने ये नहीं कहा था। नो मैंने सर, कहा था ओनली फॉर स्टडी। मेक हर केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स फाइनेंशियली। ऐसे लायक बनाओ उनको कि वो अपनी देखभाल खुद कर सकें, राइट? बट उनके सर, इतने पैसे when कमाने you की said, क्षमता हो कि वो अपने खर्चा उठा सके। यस। but sir, if you only put her in your house and only you get her certificate, then how she one day she मैं वही बोल रहा हूँ, तो आप मेरे से अग्री तो कर रहे हो, आप मेरे से अलग कहाँ बोल रहे हो, मैं भी वही बोल रहा हूँ But ना। sir, I want to अपनी say, बेटी if they do permission to go outside and do job, after that, sir, after sometimes she doesn't uh, 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 compromise with parent situation. She uh, level up her mind in seventh cloud. आप गलत जा रहे हो, आप गलत जा रहे हो, आप गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। वैसे नाच जॉब करने वाली लड़कियां भी होती है जिनका सिर सातवें आसमान पे होता है, वो लोग भी होते हैं। वो बेकार में भी रह के कुछ लोग सातवें आसमान पे रहते हैं। दैट्स यू सेड दैट, someday that there are people, the other day you said the same thing Faizan, that there are some people they are good for nothing, लेकिन उनका सिर सातवें आसमान पे होता है। तो सिर सातवें आसमान पे सक्सेस से नहीं जाता है, वो पर्सनैलिटी होती है। अगर मेरी बेटी एक बैंक में जॉब करती है, मेरी कजन जिसकी शादी होने वाली अक्टूबर में, ओके, नवंबर में, सो शी हैज अ ग्रेट जॉब, शी इज अ बैंक मैनेजर, ओके। नाउ उसका सिर सातवें आसमान पे है नहीं है, ठीक है? तो कुछ लोगों के होते हैं, कुछ लोगों का चले जाता है। तो उसका मतलब क्या? मौसाजी इज हैप्पी दैट हिज डॉटर इज सेल्फ सफिशिएंट, वो अपने आप पे Yes, निर्भर करती है। उसकी शादी I अब हो know, रही है, sir. नाउ शी 31 और 32 years of age बट now, सर, ठीक मैं है? इसलिए ऐसा कहा ना, मैं जान रहा हूँ कि मैक्सिमम ऐसा नहीं होता है, ये तो एक्सेप्शनल है। बट सर, अभी जो भी मेरे घर के आसपास में जो भी पड़ोसी हैं या फिर मेरे जो कजन लोग के घर की बातें हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ ना सर कि मम्मी पापा उनके ना बहुत अच्छे से उनको पैसा दिए, छूट दिए। लड़कियों का मैं बता रहा हूँ, वो गाँव में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, फिर भी उनको छूट दिया। लेकिन ना वो ना अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाई हैं। और अगर जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया उन वो तो मतलब एकदम लड़का कोई भी शादी उदी करने के लिए पूछा जा रहा है ना, तो मम्मी पापा का जिस हिसाब से उनका मतलब अपना हैसियत है, उस हिसाब से लड़का लेकर के आ रहे हैं। अब ये ना सिर्फ मतलब इतना चढ़ गए हैं ना कि मतलब वो उस लड़के से अब शादी ही रोमांटिक नहीं हो गए करना अपने चाहते हैं। दिमाग में, अपने जी, रोमांटिक आइडियाज चल रहे हैं। जी। ये और यंग लोग की मम्मी पापा जो खराबी है, है ना लड़कियों सर, की खराबी नहीं। नहीं सर, जस्ट अ सेकंड फैजल, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट, बट लेट्स एड्रेस इट। ये लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं है रोमांटिक हो जाना, ये यंग लोगों की प्रॉब्लम है। यंग लोग प्रैक्टिकल कम होते हैं कभी कभी, और रोमांटिक ज्यादा होते हैं। उनको लगता है कि जैसे फिल्मों में, नॉवेल्स में, बुक्स में जैसी कहानियां होती है, लाइफ वैसी होगी, राइट? तो ये यंग लोगों की प्रॉब्लम है, लड़कियों की अब प्रॉब्लम नहीं जैसे है। ये अब इनके जैसे सर नजर में लड़कियों ने महसूस कराया इनको, बट बॉयज जैसे आर सर ऑल्सो लाइक दैट। जैसे मेरे मम्मी पापा का शादी हुआ था, तो जब मम्मी पापा का शादी हुआ था ना, उस टाइम पे ना मम्मी पापा एक दूसरे को देखे भी नहीं थे। उस टाइम पे ऐसी शादी हुआ करता था, मम्मी मैंने पापा पहले ही बोलते हैं। कहा है, देवर लकी। भाई साहब, सबसे बड़ी बात समझिए, आसपास कोई दुकान नहीं थी, आपके पास एक ही ऑप्शन था, दाल भात सब्जी चोखा जो भी था घर पे था, जो वही था। बगल में दुकानें ही नहीं थी। आज आप घर के कदम निकालो और दुकानें बगल में, कभी कभी तो लिविंग रूम में दुकान है, इतना नजदीक हो गया है दुकान, आप समझ रहे हो? और फिर आपको नहीं खाना है वो सब चीज, तो ये आसान नहीं है, ये थोड़ा चैलेंजिंग है आज की डेट में। तो आप जो कह रहे हैं वो उस समय के लिए सही था, आज के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत, उसकी वजह यस। है, सीधी सी बात है, इंसानी फितरत को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? आपको खाना चाहिए, सही है, लेकिन खाने में वैरायटी चाहिए, ये भी उतना ही सही है। जो लेकिन आप बहुत कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो आप एक ही खाने के साथ रह सकते हो, नहीं तो सर, आपको लेकिन ना वैरायटी। मैं ना सर चैलेंज दे रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं ना, जिनकी भी मतलब दीदी हो बड़ी या फिर जो भी रिश्तेदार को जानते हो, अभी ना सर बहुत पेरेंट्स परेशान है, पता है। सारे पेरेंट्स बहुत परेशान है, क्योंकि बेटी परेशान पेरेंट्स से क्या लड़के पहचान, आप ही पहले बोल रहा हूँ फिर मैं बोलता हूँ। क्योंकि ना सर जो भी लड़कियां पढ़ ली है ना, मतलब पढ़ाना चाहिए, मैं भी इसमें सपोर्ट करता हूँ। मैं मेरी खुद दीदी मैनेजर है, तो मैं तो कभी बोलता ही नहीं हूँ, वो तो खुद जॉब करती हैं। और हमने लड़का भी बोलिए। ढूंढा है, तो वैसा ही ढूंढा है। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ सर कि लेकिन ना मतलब मैं जितने भी देख रहा हूँ ना परिवार को, उनकी ना लड़की लोग थोड़ा पढ़ लिख ली है ना सर, तो इतना खतरनाक हो गई है ना कि अब
वो शादी करना ही नहीं चाहती है नॉर्मल से, और मम्मी पापा का जो हैसियत है उस हिसाब से वो लड़का लेके आ रहे हैं। अब उन लोग को ऐसा चाहिए नहीं, उन लोग को गांव में रहना नहीं, उन लोग को खाना नहीं बनाना, उन लोग को सास का या ससुर का खिदमत नहीं करना, उनको अलग घर में रहना है, उनको दिल्ली में रहना है, उनको मुंबई में रहना है। तो ये जो थिंकिंग हुआ है ना सर, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। बट पढ़ाई लिखाई से ना मम्मी पापा सोचे यही थे उन लोग के कि मैं दूं, मतलब पढ़ा लिखा दूंगा तो अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी, और शौहर कुछ नाजायज नहीं कर मैं पाएगा, जवाब पहले दूं, ये। मैं जवाब, आपकी बात समझ गया, मैं जवाब दूं। भाई लोग, फैजान जो बोल रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी बात मिस है जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे। माता पिता का पहला कर्तव्य ये नहीं है कि पढ़ाएं। माता पिता का पहला कर्तव्य यह है कि बच्चों को ये बताएं कि क्या करना सही होता है, क्या करना गलत होता है। तो अगर कोई अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके बहुत लायक बना दिया है, लेकिन लायक मतलब क्या, अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है तो अच्छी बात है, फिर डिसाइड करें वो क्या करना चाहती है। लेकिन पढ़ाया लिखा है, कॉलेज भेजा, और उसकी बेटी ये भी नहीं समझ पा रही है कि जिस इंसान से शादी करेगी उसके माँ बाप की सेवा करना, सेवा करना मतलब नहीं कि पैर में तेल लगाना होता है। जैसे तुम्हारे माँ बाप जैसे हैं तुम्हारे लिए, वैसे किसी और के माँ बाप हैं उसके लिए। अगर तुम उसके जीवन में जाते हो और उसके माँ बाप को वैल्यू नहीं करते हो तो तुम कैसे उम्मीद करते हो कोई तुम्हारे माँ बाप को वैल्यू करेगा। ये कॉमन सेंस की बात भी डालना दिमाग में माँ बाप का फर्ज है। मेरी बेटी मेरे ख्याल से पढ़े लिखेगी, अभी 14 साल की है, 10th देने वाली अगले साल, और मुझे इरादा है, मेरा ऐसा मानना है कि उसका इंटरेस्ट है पढ़ाई लिखाई में। आप उससे बात करिए तो, कि कल अगर तुम्हारी शादी हुई और जिस लड़के से शादी करोगी उसके माँ बाप के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या करना है, अगर वो इकलौता बेटा होगा तो क्या करोगी। अच्छा तो मेरे सर, ख्याल से मेरी आजकल की बेटी फट से लड़कियां कहेगी जो वो हमारे आजकल साथ की रहेंगे। एक्सक्यूज सर मी फैजान, आजकल की आजकल की लड़कियां से मत बोलिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। सर आप फेस नहीं आजकल किए की हो ना, लड़कियां, मुझे इसीलिए नहीं आप सुनना इसलिए ऐसा क्योंकि बोल ये रहे हो। नहीं फ्रेज सर, में आप कुछ फेस दिक्कत नहीं है। किए हो ना, आप फेस नहीं किए हो, मैं जो फैजान, देखा फेस हूँ करने की बात क्या है, फेस करने की बात क्या है, आप अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए जैसे आपने पाल पोस के बड़ा किया है। ठीक है, अगर आपके बच्चे, एक माँ एक पिता, अभी कुछ दिन वीडियो पहले वायरल हुआ, उसने माँ को थप्पड़ थप्पड़ मारा, बेड पे लेटी हुई थी बूढ़ी माँ उसकी। वीडियो वायरल है, जाकर देख लीजिए यूट्यूब पे। ठीक है, वो ये है, क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं उसको, एडवोकेट है, ठीक है, लॉयर है यानी पढ़ा लिखा है ना भाई, उसकी पत्नी है, और तीनों मिल के मारे, वाइफ, हस्बैंड, बेटा, बहू और उसका पोता, तीनों मिलके उसको मारे। बूढ़ी औरत को, बहुत बूढ़ी औरत, और मुंह ऐसे ऐसे करके बाल हिला दिए। मतलब आप समझ नहीं सकते। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, इस बात को हटा दें। ठीक है, यहां पर हम नहीं बोलेंगे कि इस माँ का फेलियर है, हम ये नहीं बोलेंगे कि इस माँ ने ऐसा किया है कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, हम ये नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं लाइफ में कि हाँ ये चीज जरूरी है, तो आपने उनको सिखाया है कि नहीं। मैं अपनी बेटी से बात करता हूं ना कि लाइफ में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए क्या नहीं। तो अगर आप अपने बच्चे को सिखाते हैं सही चीज है, तो क्यों वो गलत रास्ते पे जाएंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज, सही और गलत का फैसला, अगर वो शादी नहीं करना चाह रहे या जिस लड़के से आप चाहते हो नहीं करना चाह रहे, हमेशा जरूरी नहीं कि वो गलत हो। गलत तब होंगे वो जब वो कहेंगे कि हम उसके माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, लड़के जिससे हम शादी कर रहे हैं उसके माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते, यहां पर वो गलत होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको समझना चाहिए जैसे उनके माँ बाप हैं, जैसे किसी और के माँ बाप हैं। अगर वो अपने माँ बाप की परवाह करते तो दूसरे के माँ बाप की भी परवाह करनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि मेरे प्रायोरिटी है कि मैं ना अपने माँ बाप के साथ रहूं ना किसी और के माँ बाप के साथ रहूं, तो कुछ लोग सेल्फिश होते हैं, ये भी मानना पड़ेगा। इसमें सर आजकल की मेरा बस लड़कियां इतना वर्ड मैं कहना नहीं था, सुनना चाहूंगा। मेरा बस इतना कहना था ना सर, कि चलिए आजकल की लड़कियां नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सर, आजकल का जो जमाना आ गया ना सर, दिखावा का बहुत आ गया है। बस मेरा ये कहने का मतलब था और आई कुछ नहीं। एग्री। और उस दिखावे के चक्कर में वो ऐसा नहीं कि कोई भी माँ बाप सिखाता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मुझे मारना, कोई नहीं आई एग्री। सिखाएगा ये चीज। आई बट एग्री। फिर भी वो आई एग्री। करते हैं। एक ही घर में आई चार एग्री। बच्चे रहते हैं, जिसमें से तीन बहुत अच्छे निकलते हैं, एक खराब निकल जाते हैं, या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं मम्मी पापा का, तो उसमें माँ बाप का कोई गलती नहीं होता है। वो तो पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। बट मैं अभी जो देख रहा हूँ ना सर, वो मैं बोल रहा हूँ। अब ये हो सके गलत हो, लेकिन मतलब मेरे एक अंकल हैं, जस्ट बगल में रहते हैं एक अपार्टमेंट में। तो वो कुछ दिन पहले वो किसी कोल कंपनी के इंडिविजुअल मतलब चीफ कहानी रह से नहीं करके पता रिटायर हुए। चलता है फैजान, फैजान, वेट वेट सर, वेट वेट वेट। फैजान। तो मेरे नहीं, एक सेकंड मौसा भी है, रुकिए ना, रुकिए उनकी ना। बेटी है।
मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, इंडिविजुअल स्टोरीज वेरी करेंगे, कभी मैं इसकी स्टोरी जान ऐसी रहा हूँ होगी, सर, दूसरे की बट स्टोरी आप ऑपोजिट होगी। मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो समझ लीजिए। ये बात सच है कि आज के डेट में इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा वैल्यू मिला है, लोग अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, दूसरों के हिसाब से कम। पहले लोग कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करते थे जी दूसरों जी के लिए, अपने आप के साथ ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते थे, यस यस दूसरों की खुशी के लिए ज्यादा तैयार रहते थे। ये बात सच है, और बहुत ये सही इस चीज को समझना होगा कि इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि जी ज्यादा सेल्फिश इंसान हो जाएगा तो सोसाइटी विल डिसइंटीग्रेट। It is true. यस सर It is true. There is no, debating this fact. Today we have become a little more self-centered. हर एक यस इंडिविजुअल जो हो गया थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, थोड़ा ज्यादा पहले से, ठीक है, और ये खतरनाक है। ओके, दिस इज नॉट गुड। लोग कहते हैं ना वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर कभी नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला कि लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए तो कह रहे हैं कि दूसरे का मामला है वो समझे, हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम खाली बीच से पीछे से रहेंगे लेकिन आगे नहीं आएंगे। ये एक तरह से भी देखा जाए, समझ रहे हो ना। एक समय वर्ल्ड वॉर हुआ क्योंकि लोग कूद गए, ठीक है। आज के डेट में देखो क्या हो रहा है, आप तो लोगों को दुनिया का पता है, पॉलिटिक्स का पता है क्या हो रहा है, मैं डिस्कस नहीं करता क्लास में, लेकिन आपको पता है लोग नहीं जा रहे, पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, सामने से नहीं कूद रहे। पता है ना क्यों? क्योंकि लोग वैसे ही है, क्या सेल्फ सेंटर्ड हो गए। पूरी दुनिया सेल्फ सेंटर्ड हो रही है, बच्चे से लेकर के हेड ऑफ स्टेट्स भी सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं ज्यादा पहले की तुलना में। तो अच्छा भी है बुरा भी है, इसको रोकना है परिवार के लेवल पे। हम लोग अपने परिवार के लिए कभी कभी सेक्रीफाइस थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किया हुआ है, उन्होंने किया हुआ है हमारे लिए सेक्रीफाइस। So we should appreciate that. We will carry on this conversation some other day, Faizan, because I have in 15 minutes another class. Okay, so I have to wrap up, guys. I'll see you all tomorrow. Okay, it was nice. Thank you. Bye bye. Don't forget to do your homework. Okay. Bye bye, everyone. Attendance Tomorrow. Tomorrow. Bye bye. Okay. Bye bye.